Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is the food, from where it comes to us, right? It means what is the source of food. You know well, all the living organisms, whatever the plants, whatever the animals, all the living organisms need food. And as you know well, without food, no one can survive. All the living organisms need food. No one can live without the food. जिंदा रहना है तो फूड चाहिए. Food work as a fuel. You know well, there are a number of the instruments. Fan need electrical energy. Our machinery, our vehicles need energy in the form of petrol, in the form of diesel. Like this, all the organisms, we also need fuel, and the fuel in the form of food. Now, there are two kind of the organisms, maybe. Number one, autotrophs. Number one, autotrophs, and second one are the heterotrophs. What are these? Autotrophs and heterotrophs. Autotrophs, auto means self. Trophs means nutrition. It means the organisms which can able to prepare their own food, are known as autotrophs. While those organisms which unable to prepare their own food, they depend upon other organisms. They depend upon other organisms to get their food. It means just like to us. We eat fruits, vegetables, food grains, and also meat. That's why flesh of other animals. That's why we are omnivorous. Omnivores means sometimes we are herbivores, sometimes we may be carnivores. So we are omnivores. So if the organism prepare their own food, like the green plants, they can prepare their own food. So these are known as autotrophs. Autotrophs, they need. What are the essential conditions for the green plants to prepare their own food? Do you know? पता है? Number one, they need water. और वाटर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O. याद होना चाहिए अब तो. So, number one, they need water. Second one, they need one another, carbon dioxide. They also need carbon dioxide, CO2. क्या कहते हैं बच्चों? C कैपिटल होगा, O भी कैपिटल होगा, O2 जो है वो छोटा वाला हो जाएगा. तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. क्या कहते हैं? पढ़ा तुम लोगों ने? कार्बन डाइऑक्साइड. So, green plants need water and carbon dioxide to prepare their own food. In the presence of two another conditions also need. Number one, green pigment. And this green pigment is the, yes, who will tell me? Can anybody tell me which is the green pigment is there? Yes, this is chlorophyll. This is the chlorophyll. Chlorophyll is the
green pigment which is present in the green leaves. Leaves are in green color. Leaves are in green in color. Do you know? Leaves are in green color. You know. You are looking here. देखना चाहते हो? तो look here. These leaves are in green in color, and they need. Why their color is green? Due to presence of the chlorophyll. Due to presence of the chlorophyll. One another essential condition is the yes. What are you looking outside? Sunlight. So two another conditions. Number one, chlorophyll, and second one is the sunlight. So plants can prepare their own food by using water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is known as photosynthesis. This process is known as photosynthesis. Got it? Now, one another portion come over here. That why do we need the food? हमको फूड की जरूरत पड़ती ही क्यों है? हमको फूड की जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो देखिए, नंबर वन, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू डिफरेंट वर्क. आप लोग खेलते हैं ना, खेलने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, टू perform different works we need food, energy, and this energy comes from the food. Second one, आप लोग अभी छोटे हैं, you are in growing age, and you are in growing age, you need much energy, much nutrients to grow your body. So it promotes body growth. If there is lack of the nutrients, कैसे हो जाएंगे? दुबले पतले हो जाएंगे, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपर ब्रेन डेवलप नहीं होगा. नेक्स्ट वन, फूड ऑल्सो हेल्प इन दी बिल्डिंग न्यू सेल्स. यू नो, हमारी बॉडी हमारे चोट लगती रहती है, बीमार भी हो जाते हैं, बहुत सारी सेल्स भी डेड होती रहती हैं. सो वी नीड continuously forming new cells, building new cells, or building new cells, and we need to replace, burn out and dead cells. पुरानी और डेड सेल्स को में क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा. और बच्चों, ये रिप्लेस करना, दिस इज दी, फॉर दिस वी नीड एनर्जी. जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी वीक हो जाती है, बिकॉज our body having a number of the dead cells. तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ नंबर ऑफ डिजीजेज. अभी अभी चल ही रहा है, यू नो वेल, क्या कहते हैं? लेमन जूस ज्यादा से ज्यादा पियो, सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लो. वाई? बिकॉज सिट्रस फ्रूट्स प्रोवाइड बूस्ट अप आवर इम्यून सिस्टम. Citric acid, citrus fruits boost up our immune system. This is over. Why do we need food? तो क्योंकि क्या जरूरत पड़ी बच्चों? Food provides us energy to do different work. It promotes body growth. Food helps in the building new cells to replace old and worn out cells. It provides protection against a number of diseases like the scurvy, corona, a number of the diseases. Now, one another portion come over here, that is the ingredients of the food. Ingredients of food. What do you mean by ingredients of the food? There are some of the materials which are required to prepare a dish.
आप लोग डिश बनाते ना, मम्मी डिश बनाती है, चाय बनाती है, टी सपोज करो, टी कर लो, टी। अब चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत पड़ी बच्चों? नंबर 1 मिल्क, सेकंड 1 वाटर, मिल्क, फिर वाटर, फिर टी लीव्स, ये टी लीव्स, देन शुगर, then the sugar, and along with the sugar we need also ginger, जो भी आप लोगों को अच्छी लगती है, जिंजर है, कार्डेमोन है, तो हम लोग उसके अंदर मिला देते हैं और उसको बॉईल कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, मिल्क और वाटर मिला देंगे, थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, टी लीव्स, शुगर वी विल ऐड देयर, देन वी विल ऐड जिंजर इन लास्ट and boil it. After some time tea is prepared to you. So these are milk, water, tea leaves, sugar, ginger. These are the ingredients. So the materials which are required to prepare a dish. Is called as ingredients. The materials which are required to prepare a dish known as ingredients. Suppose करो बच्चों दाल बनानी, तो what will be the ingredients of the pulses? दाल के क्या क्या हो गए बच्चों? नंबर 1 पल्सेस, सबसे पहले पल्स लेंगे, पल्सेस जो भी है, मूंग, मसूर, देन वी विल ऐड इट इनटू द वाटर, देन वी विल ऐड सॉल्ट, देन मॉम ऐड सम, यस, along with the salt, what she will add? Spices, and then boil it. So these are the ingredients of a pulse. Pulses, water, spices, and salt. Just like to rice. For rice, what are the ingredients of a rice? Number 1 rice. Second one, we will need water to add in it, and some salt. थोड़ा सा नमक डाल देते उसके अंदर, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है. सो दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर राइस. इसी टाइप से इडली बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? राइस फ्लोर, चावल का आटा, राइस फ्लोर प्लस सम अमाउंट ऑफ द कर्ड एंड वाटर. दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इडली. खीर बनानी है, अब खीर के क्या क्या इंग्रेडिएंट हो गए? मिल्क, राइस, शुगर, और क्या हो गया? कार्डिमोन, ड्राई फ्रूट्स. सो दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स. गॉट इट? अब एक बात बताओ, मिल्क हमको प्लांट से मिलता है या एनिमल्स से? तो यहां पर मिल्क इज द सोर्स ऑफ प्लांट, एनिमल. Spices, chili, these come from the plants. Salt come from the water, जो हमारा ओशन मैरीन वाटर होता है, उससे हम लोग सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं. गॉट इट? सो दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड.